हेलो बैक। चलो अभी केसेस देख लें। लेट्स सी वन आफ्टर द अदर केसेस और इसको हम खत्म कर देते हैं। ओके, लेट्स सी दिस। Mr. A, he agreed to purchase 100 bales of cotton from Mr. B from his large stock. A sent his men to take delivery of cotton. On completion of packing of only 70 bales, there was an accidental fire. Entire stock, including the pack of 70 bales, were destroyed. There was no insurance cover. Who will bear the loss? So simple. A has agreed to purchase 100 bales of cotton. A ने B से 100 bales of cotton लेने की बात की है from the large stock of B. B का मतलब पूरा गोडाउन भरा पड़ा है और उसमें से 100 bales A को चुनने हैं. ओके, A ने अपने पर्सन को भी बेचा है to take the delivery of the cotton. On completion, पैकिंग हो रही थी, 70 bales of cotton रेडी हो चुके थे. अचानक से आग लग गई, एक्सीडेंटल फायर हो गया. ओके, अचानक से आग लग गई और पूरा का पूरा स्टॉक इंक्लूडिंग द 70 बेल्स जल गया. अब सवाल ये बैठता है कि इंश्योरेंस कवर तो था नहीं, लॉस किसका होगा, ए का कि बी का? किसका लॉस होने वाला है? ठीक है, देखो यहाँ पे 70 bales were ascertained and appropriated. Exactly 70 bales of cotton A ने अभी तक ascertain कर लिए थे. 70 bales of cotton A ने अभी तक appropriate कर लिए थे, A ने जमा कर लिए थे. Clear? Appropriated. Property into those 70 bales were transferred to A. तो वो cotton का bales A का हो चुका था because A has appropriated. Clear? Hence, A is liable for 70 bales only and B is liable for the remaining stock. Because एक बार unascertain goods आपने ascertain कर लिए तो the buyer becomes the owner of the goods. Okay, the buyer becomes the owner of the unascertain goods. As a result, 70 bales of cotton की liability A bear कर रहा है, बाकी remaining liability Mr. B के पास जा रही है. अब ये समझ में आया everyone? Everyone clear? Okay. Next one. Let's see the next one. Okay, question 2. An auctioneer advertised in a newspaper that a sale of office furniture will be held at Kolkata on 29th November 2009. Mr. A came from New Delhi to buy the furniture, but the auction was cancelled. Whether A can file a suit against the auctioneer for his loss of time and cost? Can he do that? He cannot do that. He cannot do that. Why? Because the advertisement to auction was not an offer. It was just an invitation to hold offer. Barabar. Mr. A cannot file a suit against auctioneer for the loss of time and cost because the advertisement was merely declaration of invitation to hold auction. Exactly. It was mere declaration that we are holding an offer. Okay, advertisement is not offer but just an invitation to the offer. We are inviting somebody to come. वो आके जो ऑक्शन में अपना हाथ ऊपर करके जो बिड करता, that was the offer. That could have been the offer. Okay. Moreover, there was no agreement between A and the party. There was no agreement. क्या A और उसके बीच में कोई agreement था ऑक्शनर के बीच में? नहीं. तो how can he file a case? How can he sue that? अब समझ में आया? Then let's see the third question. Third question. ये समझ में आया सबको? Very good. Mr. Sham agrees to sell Mr. Ram 10 bags of wheat out of 100 bags lying in his warehouse for rupees 10,000. Wheat is completely destroyed by fire. Mr. Ram cannot compel Mr. Sham to supply wheat as per the contract. Do you agree? Mr. Sham is seller or buyer? Seller, na? Mr. Sham agrees to sell Mr. Ram. Ram is buyer. So Sham the seller has agreed to sell Ram the buyer 10 bags of wheat. Out of the 100 bags which was lying in the warehouse, पूरे 100 bags थे, उसमें से 10 उसको देने. The wheat is completely destroyed by fire. आग से जल गए पूरी तरह. Mr. Ram cannot compel Mr. Sham to supply the wheat as per the contract. Can he compel? Do you agree? अब इसमें क्या हो रहा है? ओके, शाम को सप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? द स्टेटमेंट इज ट्रू. यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू. क्यों? Mr. Sham cannot supply wheat as it is destroyed and the subject matter of the agreement is no longer in existence. Exactly.
We do not have the subject matter in existence. Moreover, Mr. Ram cannot compel Mr. Sham to supply the agreement specific goods as the goods are destroyed without any fault on the part of the seller. Clear? It is not the seller who has destroyed the good. It is something has happened, an event which is beyond the control of seller, and उसके वजह से ये destruction आया. Okay, so यहाँ पे there is no question of compelling one party or the other party. Let's see the other one. Mr. Sham orders Mr. Ram to deliver certain goods at Mumbai. While the goods are lying at Mumbai railway station, the station master informs Mr. Sham that the goods are held at station at Mr. Sham's risk, but Mr. Sham became insolvent. Has Mr. Ram any right as an unpaid seller? Okay, इस क्वेश्चन को फिर से समझो. Mr. Sham orders on Mr. Ram. इसका मतलब Mr. Sham is the buyer and Mr. Ram is the seller. बराबर. And Mr. Sham ने Mr. Ram को order दिया है to deliver certain goods at Mumbai. Clear? While the goods are lying at the Mumbai railway station, अभी भी goods पड़े हैं. बराबर. The station master is informing Mr. Sham, the buyer of the goods, that sir आपके goods पड़े हैं, आपके लिस्ट पे पड़े हैं. Sham insolvent हो गया. क्या राम अपने goods वापस claim कर सकता है? Interesting, man. See, let's see. The goods have reached its destination and are in possession of station master who is supposed to deliver the goods to Mr. Sham. बराबर. The goods have reached destination मुंबई के लिए थे, and it has reached Mumbai, and it is the station master who has to deliver to Mr. Sham. The station master is a bailee of Mr. Sham. ये बात भी ठीक है. And not of Mr. Ram, the seller. ये भी बात ठीक है. An unpaid seller can stop the goods in transit in the event of buyer's insolvency. This right has been lost by the seller as the goods are no longer in transit. See the answer, the institute answer. Unpaid seller का right of insolvency तब तक है when the goods in transit होता है. Goods चल रहा है या destination पे अभी तक पहुंचा नहीं है. But since the good has reached the destination, it is in the hands of the bailee. Clear? The transit is over, and as a result, the Mr. Whoever क्या है Ram cannot claim the goods back. Then this one, Mr. Ram gives some diamonds to Mr. Sham on sale or return basis. On same day, Mr. Sham gives those diamonds to Mr. Jadu on sale or return basis. Those diamonds were lost from Mr. Jadu on same day. Who will bear the loss? देखो सेल और रिटर्न का केस दिया है. मिस्टर राम ने वो डायमंड शाम को दिए थे. आई एम राम, योर शाम, आई एम गिविंग इट टू यू. सेल और रिटर्न के या तो बिकेगा नहीं तो वापस कर. तुमने वो डायमंड पीछे लास्ट बेंच वाले लड़के को दे दिए ऑन सेम डे एंड सेल और रिटर्न बेसिस. क्लियर? उससे वो डायमंड खो गए. उससे तो वैसे भी खोता रहता है. जब देखो पेंसिल ढूंढता है, पेन ढूंढता है, इधर उधर नीचे घुस जाता है. बैठा कर सीधा. ओके, क्लियर? फाइन, ये समझ में आया? तो चलो, आंसर इज while giving diamonds to Mr. Jadu, Sham behaved like the owner of the diamonds. ये बात सही है. As he becomes the owner, he should bear the loss and make the payment to Ram. Clear? Losing of diamonds by Jadu does not establish his ownership. Hence, he will not bear the loss. देखो इंस्टीट्यूट का आंसर देखो. राम ने शाम को दिया, शाम ने जाडू को दिया. अब शाम ने अगर जाडू को दिया तो इसका मतलब उसने मान लिया कि डायमंड्स उसके हैं, अभी उसने बेचा ना. बराबर? क्लियर? तो एज अ रिजल्ट शाम इज बिहेविंग लाइक अ ओनर ऑफ द डायमंड्स, so Sham has to bear the loss. What about Jadu? Does Jadu has to bear the loss? He is not supposed to bear the loss because उसने अभी तक goods sale और return है ना, goods पूरी तरह accept का की है. Is that clear? Is it clear? Okay. Let's see the other one. Question number 6-1. Mr. Roy gives Mr. Ghosh on hire a horse for his own riding, but Mr. Ghosh drives the horse in his carriage. What action Roy can take? Okay. Mr. Roy ने Mr. Ghosh को hire basis पे horse दिया था for his own riding. Okay, clear? But Mr. Ghosh ने क्या किया, उस horse को local carriage होता है ना, carriage, टांगा, हाँ exactly टांगा, उसके साथ बांध दिया. So क्या रॉय उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है कि मैंने तेरे को तेरे राइडिंग के लिए दिया था, कैरेज पर्पस के लिए नहीं,
तो हॉर्स से कैरेज का कमाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे the answer is this is a contract of bailment and Mr. Ghosh has not followed the conditions of bailment and his action to use the horse in his carriage is not as per the terms of the bailment. देखो, hire purchase is a bailment. Hire purchase is a bailment. This is a contract of bailment and Ghosh is supposed to follow the conditions of the bailment. He has not followed it. He is using the horse for some other purpose. So it is now up to Mr. Roy to continue with or terminate the bailment. So, who has to make the decision? It is the decision of Mr. Roy whether he wants to continue or he wants to terminate the bailment. Okay, Roy, the one who has given a hire. Okay, fine. Now we are on question number 7. Okay, Mr. X accepted certain goods of Mr. Y for delivery at Durgapur. When the delivery of the truck which was carrying the goods went for lunch, when the driver of the truck which was carrying the goods went for lunch, the goods were stolen. There was no insurance. What remedy Y has? So, Mr. X has accepted certain goods for Mr. Y for delivery to Durgapur. Matlab, who is bound to make the delivery? X is bound to make a delivery to Durgapur for Y. Okay? Or return it back to Y. That's how it is. And when the driver of the truck was carrying the goods, he went for lunch and the goods got stolen. There was no insurance. Does Y has a remedy? Yes, he does. Okay, let's see. Mr. X is bound to deliver goods at Durgapur on return it back to Mr. Y. Barabar. He does neither, hence Y can claim damages from X. बराबर, ना तो तू दुर्गापुर पहुंचाया ना मेरे को दिया, तो मेरे को कम से कम मेरा नुकसान हुआ है वो तो भरपाई कर. Y can file a suit against X and goods were stolen because of the fault of X as he did not make an arrangement for his safety when the driver went for food. तो जब X बेलमेंट की तरह काम कर रहा था, बेली की तरह काम कर रहा था, देखो गुड्स उसके पास थे, तो डेफिनेटली गुड्स का ध्यान रखने का काम भी तो मिस्टर X के पास था, पर वो उसने बराबर नहीं किया. तो he did not take the protection of the goods when he went for food. So to get the goods insured was also the part of Mr. X when he accepted the contract for Y. भाई मेरे goods को deliver कराना था, goods का insurance, that is the relevant insurance was your carrier insurance जिसे बोलते हैं, वो तो उसको ही लेना पड़ेगा ना. तो Y has got all the rights to claim the damages. आप समझ में आया इंस्टीट्यूट का आंसर क्या था? Clear everyone? Very good. Now 8th वाला. Okay, let's see. Mr. Bose settled the price after selecting 2 chairs. He arranges to take the delivery of the chairs next day and agrees to pay next month. Said chairs were destroyed by fire before delivery. Seller demanded the price. Mr. Bose refused. State the legal position. So case क्या है? Bose settled the price after selecting 2 chairs. Okay? तो Bose ने 2 chairs select की है and ये settle के इतने में मैं खरीदता हूँ. He arranges to take the delivery of the chairs next day. कल आऊंगा, चेयर लेके जाऊंगा, ट्रक वर्क भी लेके आऊंगा, बात भी कर ली ट्रक वालों से, ठीक है. नेक्स्ट मंथ में पेमेंट कर दूंगा. क्लियर? पेमेंट कब आएगी? नेक्स्ट मंथ में. The said chairs were destroyed by fire before it was even. As seller ने बोला सर आपने खरीदा तो आपको प्राइस देना पड़ेगा. मिस्टर बोस ने रिफ्यूज किया. क्या मिस्टर बोस को प्राइस देना पड़ेगा? What is the legal position? See, Mr. Bose should pay the price. When the goods were specified by Mr. Bose and the price was also settled, the contract was complete and the title of the chairs was passed to Mr. Bose from seller. So ये बात क्लियर थी कि उसने ये चेयर बुक कर ली थी. ओके, कॉन्ट्रैक्ट भी सेटल हो चुका था. इंस्टीट्यूट का आंसर देखो क्या है? मिस्टर बोस शुड पे द प्राइस. कई लोग यहाँ पे बोल रहे थे सर प्राइस देने की कोई जरूरत नहीं है. क्यों? नेक्स्ट मंथ का था ना, प्राइस देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कोई ना डिलीवरी ली थी. पोजीशन की बात कर रहे हो, लेकिन ओनरशिप एंड डिलीवरी दो चीजें होती हैं, बराबर. तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? मिस्टर बोस शुड पे द प्राइस व्हेन द गुड्स स्पेसिफाइड बाय मिस्टर बोस इज सिलेक्टेड and the price is also settled, the contract is also complete, the title of the chair has already passed to Mr. Bose. Okay, और उसको डिलीवरी मिस्टर बोस को कलेक्ट करनी थी. Look at the question. यहाँ पे he arranges, he means the Mr. Bose was to arrange the delivery of the chairs.
तो डिलीवरी मिस्टर बोस को अरेंज कर रही थी कि सेलर के पास पड़े हैं, तो इन दैट केस those shares were kept as reserve for Bose and the seller was simply keeping the custody of the share on behalf of the Bose. बराबर? The seller is entitled to demand and receive the price of the shares. अब समझ में आया? ये और छोटी छोटी मिस्टेक एग्जाम में कर जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला था, क्योंकि कई स्टूडेंट बोलते हैं सर हमारा आंसर एग्जामिनर के आंसर से मैच क्यों नहीं करता। क्यों देखो ना, अभी ये देखने के बाद कई लोग यही बोलते थे क्या, जैसे अभी क्लास में तुम लोगों ने बोला कि सर यहाँ पे मिस्टर बोस को तो ना पैसा देना पड़ेगा, उसने तो चेयर की डिलीवरी ली नहीं थी, लेकिन ये देखना ओनरशिप एंड डिलीवरी में क्या ओनरशिप गई है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुई है तो सामने वाले को पेमेंट करनी पड़ती है। आप समझ में आया? क्लियर एवरीवन? ओके, क्वेश्चन 9 देखो। Raman sold 50 kgs of rice to Khagan, who paid by check, and Raman gave the delivery order to Khagan. Khagan resold such rice to Bhabin, who purchased the good on good faith and for a consideration. Khagan's check was dishonored. Raman refused to deliver the rice to Bhabin on the plea of non-payment. Advise Bhabin. Clear? क्वेश्चन अगेन रीसेल का है, अच्छा क्वेश्चन है। रमन हैज सोल्ड 50 kgs ऑफ राइस टू खगन, ये बोला गया है, एंड हु पेड बाय चेक, तो खगन ने रमन को चेक दिया हुआ है, रमन सेलर है, खगन बायर है और पे किया हुआ है, ठीक है। एंड रमन गेव द डिलीवरी ऑर्डर टू खगन ऑल्सो, रमन गेव द डिलीवरी ऑर्डर, ठीक है तेरे हिसाब से मैं डिलीवरी कर देता हूँ। एंड खगन हैज रीसोल्ड दैट राइस टू बबिन, बबिन को बेच दिया है। वो परचेज इन गुड फेथ फॉर अ कंसिडरेशन, यानी उसने खगन को पैसा दिया और खगन का चेक डिसऑनर्ड हो गया। लो, रमन रिफ्यूज कर रहा है, मैं भेजूंगा ही नहीं, मेरे को पैसा ही नहीं मिला है, मैं क्यों भेजूं। तो इसमें आपको पूछा है इंटरेस्टिंग पॉइंट, भविन को क्या एडवाइस दे, यू हैव टू एडवाइस टू भविन, ठीक है। अब देखो इंस्टीट्यूट का आंसर क्या था, according to Sale of Goods Act, it is implied condition that only owner can sell the goods. बराबर? Clear? It is expressed in Latin phrase nemo dat quod qui non habet, and Bhavin cannot claim the delivery of goods because Khagin cannot sell what he does not have. आंसर का नेचर देखो, क्योंकि तुम लोग में से कई लोग उल्टे सीधे आंसर लिखे हुए हैं, जब ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे कि अपने आप पे ट्राई करना, तो तुम लोग कुछ भी आंसर लिखते हो, अपने आंसर देखो और अभी देखो इस आंसर का तरीका, आप समझ में आया। तो यहाँ पे Bhavin did not claim the delivery of the goods because Khagin did not sell what he does not have. उसके पास हा ही नहीं, टाइटल ही नहीं था। अब देखो पूरे क्वेश्चन में ये टाइटल के बारे में बातचीत तो कहीं नहीं लिखी हुई है, लेकिन वही तो आपको समझना है क्या लॉ का पॉइंट क्या लिखना है, ठीक है। Khagin right on rice is invalid because his check was dishonored and he was not the owner of the rice when the price was. Again ownership पे आया, तो जब आप ओनर ही नहीं थे तो आप दोगे कैसे टाइटल, तो भविन को क्या टाइटल मिलेगा? नहीं। हाँ, वो खगिन से अपना पैसा क्लेम कर सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट क्या भविन को टाइटल मिलेगा? नहीं। क्लियर? अब इंस्टीट्यूट का आंसर देखना, तो कई लोग हो जो भविन को उल्टे सीधे एडवाइस दे के आते हो, यू कैन क्लेम, यू कैन सू खगेन, अरे ये सब थोड़ी ना पूछा है। आपको सेल ऑफ गुड्स के एम्बिट में आंसर लिखना है, ठीक है। क्या पूछ रही हो? इतने इतने आंसर होंगे, इतने इतने आंसर ही हैं इंस्टीट्यूट के, ये इंस्टीट्यूट के आंसर है, इतने ही थे, इतने ही दिए थे, इतने में ही मार्किंग देनी थी सबको, ठीक है। लेट्स सी, stock of bark was sold on an agreed price per ton. The bark was to be weighed by the agent of the seller and also by the buyer for ascertainment of price. The part of the bark was weighed and carried away by the buyer's agent on 12th November of whichever year, and on 13th November the remaining stock was swept away by flood. Who will bear the loss and why? Okay? इक्वेशन के हिसाब से स्टॉक ऑफ बाग, बाग मतलब वो जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना, उनको बांधा होता है, उनको बोलते हैं बाग। तो ये स्टॉक ऑफ बाग्स वाज सोल्ड एट द एग्रीड प्राइस पर टन, ये रहा, बाग को बेच दिया। बाग वाज टू बी वेट, मतलब उसका वजन करना था बाय द एजेंट ऑफ द सेलर, ओके, एंड ऑल्सो बाय द बायर फॉर असर्टेनमेंट की इतने वाले हम लोग, मतलब जैसे मैंने अगर आपको बोला है 13 किलो बाग, तो 13 किलो है कि नहीं, वो दोनों को बेचेगा वजन करना। The part of the bark was weighed and carried away by the buyer's agent on 12th November.
बाहर का एजेंट आके लेके गया। 13 नवंबर को फ्लड आ गया एंड बह गया, वो खत्म हो गया। नाउ हु विल बेयर द लॉस? विल बेयर द लॉस? अगेन ascertainment of goods के ऊपर आए। So goods must be ascertained for property in goods to be transferred to the buyer. बराबर? Clear? The loss of remaining stock to be borne by the seller as a property in the remaining stock was not passed because the required weighing was not complete. आप समझ में आया? So देखो आंसर लिखने का तरीका, गुड्स को आपको असर्टन करना पड़ता है। एक बार असर्टन हो गया, प्राइस एग्री हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ओनरशिप चलेगी। अब टोटल बाग में से अभी तक एज पर द एग्रीमेंट अग्रीड प्राइस वगैरह की बात हुई थी, तो वेट वो भी हुआ था, लेकिन ओनली द पार्ट ऑफ द बाग वाज वेट। क्वेश्चन के हिसाब से पार्ट वाज वेट, बस छोटा सा पार्ट असर्टन किया था और उतने का कॉस्ट तो उसी को बेयर करना पड़ेगा जिसने उसको खरीदा था, बायर को, लेकिन बाकी का कॉस्ट सेलर बेयर करेगा, नॉट द बायर। ओके फाइन। Mrs. Kamini purchased a tin of standard quality of kerosene oil from a dealer of repute. Okay, when part of the kerosene was put in stove for cooking, an explosion occurred, causing a damage. Mrs. Kamini claims damage from the dealer who refuses to pay the damages. Offer your views in sale of goods. क्वेश्चन क्या है? मिसेस कामनी है, उन्होंने स्टैंडर्ड कुकिंग ऑयल कैरोसिन ऑयल लिया था, हमें रेप्यूटेड, बहुत पुरानी बात होगी ये, पुरानी इसलिए कि पुराने टाइम में वो स्टोव में डाल के ऐसे ऐसे करते थे, आजकल गांव में भी मैंने देखे काफी चेंजेस आ चुके हैं। तो उस टाइम पे उसने स्टोव लिए थे एंड व्हेन द पार्ट ऑफ द कैरोसिन वाज पुट टू यूज इन दैट स्टोव फॉर कुकिंग, एक एक्सप्लोजन हुआ और मिसेस कामनी को काफी इंजरी आई, डैमेजेस हुए। अब सवाल है, मिसेस कामनी ने डैमेजेस क्लेम किए, तुम्हारा कुकिंग ऑयल खराब था, तो कैन शी क्लेम damages? इंस्टीट्यूट का आंसर देख लेते हैं। Section 16 states that goods sold should be capable of being used for the purpose of which it has been sold. बराबर? ये बात बराबर है भाई। अगर आप कोई गुड्स खरीदते हो तो आप उसको यूज तो कर सकते हो, आपके ड्रेसेस खरीदते हो तो फिट तो होनी चाहिए, बराबर? इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर व्हिच इट इज परचेज्ड फॉर। ओके, kerosene oil should be capable of being used as fuel, which was not so in the present case. Clear? Institute बोलता है kerosene oil should be capable of being used as a fuel, but that was not, it was combustible. Okay, Kamini shall be entitled to receive back the price as well as compensation for the loss. So she can claim back the price as well as the compensation for the loss. Okay, fine. 12th question देखो. Mr. Ambika, an agent of a buyer, obtained goods from railways and loaded such goods on a truck on 2nd November. In the meantime, the railway received a notice from the seller, consignor, for stopping the goods in transit as the buyer became insolvent. Referring Sale of Goods Act, decide whether railways can stop the goods in transit as instructed by the seller. Okay, Mr. Ambika एजेंट है बायर का एंड उसने रेलवे से गुड्स लोडिंग करवा दिया 2 नवंबर को, और रेलवे को एक नोटिस मिला है सेलर से, कंसाइनर से, कि भाई जो भी गुड्स है प्लीज स्टॉप इन ट्रांसफर, बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। नाउ वेदर द रेलवे कैन स्टॉप द गुड्स, चांसेस तो नहीं लगते, देख लेते चलो। As the goods are not in possession and control of railways, they cannot stop the goods in transit because the railways have already given the goods to Ambika. बराबर, अभी भी गुड्स का पोजीशन किसके हाथ में है? अंबिका के हाथ में, रेलवे के हाथ में नहीं। So there is no question of stopping in transit. Okay, it is Ambika who can stop the goods in transit because the goods are loaded in his truck as per the instructions of Ambika. Okay, so finally stop in transit का ऑर्डर वही दे सकता है जो उस ट्रक का मालिकाना हक रखता है, that is Ambika himself. Okay, fine. Let's see the other one. Mr. Paul वाला केस. Okay, Mr. Paul sold to Mr. Ray certain quantity of foreign refined palm oil warranted equal to sample. The sample consisted of palm oil mixed with vegetable oil.
The vegetable tender corresponds with the sample, but it was not such as is known in the market of the foreign refined palm oil. Mr. Ray wants to reject the oil on the ground that the oil supplied was not in accordance with the foreign refined palm oil. Advice Mr. Ray. Okay, so देखो केस क्या है. एक मिस्टर पॉल है. मिस्टर पॉल is a seller and he has sold to Mr. Ray certain quantity of foreign refined palm oil बेचा है. Clear? Which is palm oil which is warranted equal to the samples के हिसाब से था. And the sample consisted of palm oils which was mixed with vegetable oils also. ये था ना, the sample consists of palm oil mixed with vegetable oils. The oil which was tendered corresponds with the sample. जो oil दिया था वो sample के हिसाब से था, but it was not as such known in the market as a foreign palm oil. पर वो नहीं था जो market में नाम से चलता है foreign palm oil के जगह. And Ray wants to reject the oil on the ground that the oil that you have supplied is not a foreign refined palm oil. तुमने palm oil refined वाला दिया ही नहीं है. क्या हमको किसको एडवाइस करना है? रे को. रे इज अ बायर. रे इज अ बायर. बायर को एडवाइस करने के लिए. तो अपना क्लाइंट कौन है? बायर. ठीक है, फाइन. एडवाइस किया. इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? मिस्टर रे कैन रिजेक्ट द गुड्स. मिस्टर रे कैन रिजेक्ट द गुड्स. In case of sale by sample as well as by description, goods must not only correspond to the sample but also to the description, that is foreign refined form. तो अगर आप सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन कर रहे हो तो दो चीजों का ध्यान रखना है. सैंपल भी होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन भी. क्लियर? तो यहाँ पे सैंपल तो मीट हो रहा था, डिस्क्रिप्शन नहीं था. इट वाज नॉट अ फॉरेन रिफाइंड पाम ऑयल. ओके, नो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन can compel a person to buy a thing different from what contracted to buy. See, very clearly stated, no amount of exemption can compel a person to buy a thing which is different from what is contracted to buy. Okay, here? Fine. Let's see, question number 14. As per order, Mr. Malhotra sent some goods to Mr. Paul at Kolkata through Ray. The station superintendent of Howrah station informed Mr. Paul that the goods are held at the station at Mr. Paul's risk and cost. In meantime, Mr. Paul became insolvent. Mr. Malhotra wants to enforce the right of unpaid seller. Can he do so? A similar question abhi padha na? Yes. So can he do so? Okay. Let's see. Answer. The goods has reached its destination and the seller, Mr. Malhotra, has no right of stoppage in transit as the transit is over in Kolkata. Mr. Paul has become insolvent. Hence he cannot make any payment. Mr. Malhotra cannot act as an unpaid seller because the buyer is not capable of making any kind of payment. Clear? तो यहाँ पे stoppage in transit का तो सवाल ही नहीं होता. ठीक है? Fine. Let's see the other one. Asim sells 1600 kgs of wheat out of large quantity lying in his warehouse, forwarded to Bablu. Now, out of these, Bablu sells 600 kgs to Chandan, wheat yet to be ascertained. When Chandan delivered the order signed by Bablu to Asim, who confirmed that the wheat would be dispatched in due course, Bablu then became insolvent. Asim refused to deliver to Chandan. Advised Chandan. क्या लगता है हमको एडवाइस किसको करना है? थर्ड पार्टी को, चंदन. केस क्या हुआ? देखो, असीम के पास 1600 kgs ऑफ व्हीट पड़ा था, लार्ज क्वांटिटी वेयर हाउस में पड़ा, बराबर, और उसने बबलू को बेच दिया. ही सेल 1600 kgs ऑफ व्हीट किसको? उसी के वेयर हाउस में पड़ा है, बबलू को. आउट ऑफ दिस बबलू ने 600 kg चंदन को बेचा है. 1600 में से कितना? 600 kg चंदन को बेचा है, बराबर. And wheat yet to be ascertained, अभी तक उसको असर्टन नहीं किया गया, बराबर. और चंदन के पास जो डिलीवर्ड ऑर्डर आया था बबलू का, वो उसने असीम को सबमिट किया, सर मेरे को 600 kg डिलीवर कर दो. तो उसका डिस्पैच होना अभी बाकी था, ड्यू कोर्स में था. बबलू इतने में इंसॉल्वेंट हो गया, तो पेमेंट तो आने से रही. तो असीम ने रिफ्यूज कर दिया, भाई मैं डिलीवर नहीं करूंगा जब तक मेरे को पेमेंट नहीं मिलेगी, बराबर. तो असीम कैन नॉट रिफ्यूज टू डिलीवर 1600 kgs टू चंदन. देखो वर्ड देखो, कैन नॉट. क्यों? 53 provides that a seller Asim loses his right of lien if he has assented to the sale subsequent to the buyer. Okay? अब यहाँ पे
चंदन के डिलीवर होने के बाद, चंदन के ऑर्डर देने के बाद, देखो चंदन ने दिया ना इधर, चंदन डिलीवर द ऑर्डर साइंड बाय असीम टू एंड ही हैज कंफर्म दैट द वीट वुड बी डिस्पैच। तो इन दैट केस भाई असीम ने कंफर्म किया हुआ है, तो इंस्टीट्यूट का आंसर है कि असीम कैन नॉट रिफ्यूज टू डिलीवर 600 टू चंदन। 53 provides that the seller Asim loses his right of lien if he has assented to the sale of subsequent buyer. By giving assent to Chandan, Asim has lost. अब ये वाला लड़का बोल रहा है कि सर वो नीमो डेट वाला यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, नो वन कैन हैव बेटर टाइटल। यूज कर सकते थे अगर टाइटल नहीं था तो, टाइटल नहीं था तो, पर क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखूं तो चंदन ने साइन किया हुआ इसको दिया जिसको असीम ने कंफर्म किया है। इसका मतलब टाइटल की ट्रांसफर और ये सब बातें तो हो गई ना। एज अ रिजल्ट चंदन के पास प्रॉपर्टी क्लेम करने का हक आ गया। यानी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कहीं कहीं पे वो एकदम सिमिलर लगता है और कहीं कहीं पे एकदम अलग भी होता है। ओके, क्लियर? लेट्स सी द अदर वन। Mr. Bartley Boy bought 50 kgs of potato against cash payment from Mr. Joshi under a contract of sale, but half of the consignment was rotten and Mr. Joshi refused to change the rotten potato and nor refunded the value. Advice Mr. Bartley Boy. Bartley Boy bought. इसका मतलब Bartley Boy buyer हुआ. So Mr. Bartley Boy has bought कितना? 15 kgs. 50 kgs of potato. अगेंस्ट कैश पेमेंट, पैसा दिया है कैश पेमेंट फ्रॉम मिस्टर जोशी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये लिखा ना, बट हाफ ऑफ द कंसाइनमेंट वाज रॉटन, खराब था, एंड मिस्टर जोशी इज रिफ्यूजिंग टू चेंज द पोटैटोज। क्या बोलते हैं, रिफंड मिलना चाहिए, रिफंड मिलना चाहिए। इस केस में इंस्टीट्यूट बोलता है मिलना तो चाहिए, बट देखते हैं, द सेलर शुड डिलीवर द पोटैटोज इन गुड कंडीशन व्हिच ही हैज नॉट डन। बराबर, the buyer has right to ask for good quality and correct quantities of potato. ये भी बराबर है। As per Sale of Goods Act, the seller should pay for the rotten potatoes. The seller should pay for the rotten potato. The quantity indicates that the goods were not personal consumption and for the commercial purpose. The quantity clearly indicates that the goods were used not for personal consumption or for commercial purpose. Hence, Mr. Joshi cannot take the plea of implied condition as to fitness. Okay, the doctrine of caveat emptor would apply to Mr. Joshi, does not have the case. Okay, the doctrine of caveat emptor would apply. देखो कौन सा doctrine apply? Buyer be aware. So Bartley Boy doctrine of caveat emptor does apply, but Mr. Joshi does not have a case. He is a seller. उसको वो चीज बराबर देनी चाहिए. The exception to doctrine of caveat emptor. Okay, he cannot say, Mr. Joshi का क्या कहना था कि as per the doctrine of caveat emptor, buyer has to check. but check तो ठीक है, अगर तुमने माल खराब बेचा है तो कैसे चलेगा? Okay, A, the buyer ordered a patent smoke consuming furnace by the patent's name for his brewery on B. Furnace received was however found to be unsuitable for the purpose. Hence the seller is responsible. Do you agree? अब हुआ क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, मिस्टर ए, he is a buyer and he has ordered a patent smoke consuming furnace by its patent name for its brewery at B. मतलब देखो वो क्या बोलते हैं उसको, वाइन शॉप थी। वाइन शॉप में ना एक ऐसा फर्नेस है जहाँ पे आपको वाइन को काफी टाइम तक रखना पड़ता है, एक स्टीम के जैसे उसको बनाना पड़ता है। तो उसके लिए उसने एक रेप्यूटेड पेटेंट फर्नेस मंगवाया था और वो पेटेंट नाम, ब्रांड नाम से आया था, इसको पेटेंट नेम बोलते हैं, फॉर हिज ब्रूवरी। ओके, दैट वाज उसके शॉप के लिए ऑन बी। तो बी को ऑर्डर दिया था, फर्नेस जो मिला was not suitable for the purpose जो उसके लिए सेलर इज, तो जो सेलर मिस्टर बी है वो रिस्पॉन्सिबल। डू यू एग्री? नहीं, he is not responsible. The seller is not responsible because he supplied to goods as per the orders and specifications of the buyer. बायर ने जैसे बताया था कि उसको ब्रीवरीज के लिए चाहिए, वैसे उसको बना के दिया था। If the buyer could not use the goods for his purpose, it is not the failure of the seller. कई बार होता है हम लोग किसी एक इंटेंशन के हिसाब से एक चीज लेके आते हैं और कई बार वो चीज उस पर्पस के लिए सर्व नहीं होती है ना, कई बार ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज को अब मैं वापस कर सकता हूँ। Sometimes the buyer will refuse, sometimes the seller will refuse, and many times they do that आप अपनी मर्जी से लेके गए थे। ओके,
So buyer should have been careful while giving the order for the goods, whether such goods would serve him purpose or not. Who has to be careful? The buyer has to be careful while giving the order whether it serves the purpose or not. That is again caveat emptor coming in. Okay, clear? Next, 18th wala. Mr. Barun tells Mr. Tarun in the presence of Mr. Arun that he is the agent of Arun who maintains silence instead of denying Barun's statement. Later on, Barun sells Arun goods to Tarun. Arun now disputed Tarun's title to the goods as Barun was not the agent of Arun. Explain whether Arun is right. अच्छा, Mr. Barun tells Tarun. पहले ही बोला तो Barun ने Tarun को बोला. Mr. Barun tells Tarun in the presence of Mr. Arun, Arun के रहते हुए, that he मतलब Barun. Barun is the agent of Arun. Okay, Arun वहां पे खड़ा था, तो मैं ही इनका एजेंट हूं ऐसा करके बोला. And Arun maintains silence. He does not deny Barun's statement. Later on, Barun ने Arun के goods Tarun को बेचे. Arun now disputed Barun's title. Arun बोलता है Barun मेरा एजेंट ही नहीं है, मेरे goods कैसे बेच सकता है? Now Barun was not the agent of Arun. ये भी बात सही. Whether Arun has a right. Explain whether Arun is right. ये पूछा है, आपने को पूछा है Arun, the one जिसके goods बेचे थे. Can he dispute that? क्या बोल रहे हो? Estoppel, exactly. चलो देख लेते हैं. So in this case, Arun cannot dispute Tarun's ownership title to the goods. That is, Arun ये नहीं बोल सकता goods के ऊपर Tarun का title नहीं है. Section 27 of Sale of Goods Act provides where the owner by his conduct or omission leads the buyer to believe that the seller has a right or authority to sell, he is stopped from denying the fact afterwards. So where the owner by his conduct or omission, या तो ओनर ने कुछ ऐसा कंडक्ट किया या उसने नहीं किया है, ओके, बट ही लीड्स द बायर टू बिलीव दैट द सेलर हैज अ राइट. सेलर मतलब सेलर ने किसी को अथॉरिटी दी है और उसके पास वो हक है बेचने का, then he is stopped from denying the fact afterwards. Any seller cannot deny the facts, so the buyer thus gets the better title than the seller. This is called sale by stop. Okay, so buyer does get, देखो यहाँ पे वरुण ने goods बेचे हैं. Later Barun sells Arun goods to Tarun. Arun अब ये dispute कर रहा है, मेरे goods कैसे बेचे? वह बेचे हैं. तो in that case the buyer gets, Tarun gets a better title than compared to Arun. Okay, clear सबको? Fine. Let's see the 19th one. Mr. A purchased a refrigerator from B on hire purchase agreement expiring on 31st of December 2015. Mr. A sold on 1st May 2013. Dates का ध्यान रखना. That the refrigerator to C who purchased against adequate consideration. A has right to give good title to Mr. C. Do you agree? Okay. Question में क्या हुआ? A has purchased the refrigerator. किससे? From Mr. B. कैसे? From hire purchase agreement. कब तक था? 31st December 2015 तक था. A sold on 1st May 2013 यानी 15 होने से पहले वो रेफ्रिजरेटर किसको बेचा? C को बेचा. ओके, वो परचेज अगेंस्ट एडिक्वेट कंसिडरेशन. बराबर. A has a right to give good title to Mr. C. क्या बोलते हो? नहीं. यस, ठीक है. देखो, under the hire purchase agreement the ownership passes to the buyer only on payment of last installment. ये बात भी क्लियर है. Clear है. The hirer under the hire purchase system has no title to refrigerator therefore. बराबर. Clear. A cannot give good title to C. This is because C does not get a better title than A. A cannot give a good title because C के पास जो title जाएगा वो वही जाएगा जो A से आएगा, और A himself is buying on a hire purchase. Okay, let's see 20th question. Messrs. Wholesaler agreed to supply 1000 pieces of cotton to Messrs. Retailer at 300 shirt on 31st May 2013.
On 1st Feb 2013, Messrs. Wholesaler informs the retailer that he is not willing to supply the shirt as the price of the shirt has increased to 350 each. Examine the rights of retailer. Messrs. Wholesaler ने बोला सर मैं आपको 1000 कॉटन शर्ट्स देता हूं एट 300 रुपीज. कब तक? 31 मई 2013 तक डिलीवरी हो जाएगा. 1 फरवरी को बोल रहा है होलसेलर कि मैं आपको नहीं दे पाऊंगा कि शर्ट का प्राइस हो गया 350 रुपया. अब इस केस में क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, क्या डिसीजंस आया? तो लेट्स सी. On 1st February, the Messrs. Wholesaler indicated his unwillingness to supply cotton shirts at 300 per shirt, although there is a time up to 31st May 2013 for performance of the contract. On 1st Feb 2013 को wholesaler indicated his unwillingness to supply the cotton shirt at 300, even though there is time till 31st May 2013 for performance of the contract. It is therefore called anticipatory breach of contract. क्या बोलते हैं? Anticipatory. याद है पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में? Exactly. In such case, Messr. Retailer can claim the damage, and Messr. Wholesaler may treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as rescinded and claim the damage for the breach. तो ये डील जहां पे रिटेलर के पास क्या चॉइस है? दो चीज. रिटेलर कैन वेट टिल द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, ही कैन वेट, एंड बाय द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन ही कैन डिसाइड कि डैमेजेस क्लेम करना है कि नहीं, क्योंकि अगर एंड तक डिलीवर कर दिया तो काम हो जाएगा. लेकिन अगर रिटेलर अभी के अभी इसको कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करता है, देन ही कैन क्लेम द डैमेजेस फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रीच. ओके, ही कैन क्लेम द डैमेजेस फॉर एनी काइंड ऑफ, ठीक है ना. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मिस्टर मल्होत्रा, यस, मिस्टर मल्होत्रा sold 1000 kgs of rice to Mr. Basu, who delayed in taking the rice from Mr. Malhotra. In the meantime, Mr. Malhotra sold those rice to Mr. Roy, who took the delivery for value and without notice of the prior sale. Hence, Mr. Roy has no good title of the ownership. Do you agree? क्वेश्चन में क्या हो रहा है? मिस्टर मल्होत्रा हैज सोल्ड 1000 kgs ऑफ राइस टू मिस्टर बासु. बराबर. मल्होत्रा इज अ सेलर, बासु इज अ बायर. हु डिलेड इन टेकिंग द राइस, मतलब बासु ने अभी तक राइस की डिलीवरी ली नहीं. इन द मीन टाइम मल्होत्रा जी ने यही राइस उठा के बेच दिया रॉय को, एंड हु हैज टेकन द डिलीवरी फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस ऑफ द प्रायर सेल. तो राइस किसका है? और अपने से पूछा है कि मिस्टर रॉय हैज नो गुड टाइटल टू द प्रॉपर्टी. डू यू एग्री? ये पूछा है. तो आंसर क्या होगा? रॉय के पास टाइटल है कि नहीं? रॉय के पास टाइटल है. तो देखते हैं. Where Mr. Malhotra, having sold goods, continues in possession thereof or documents of title to the goods, the delivery by such seller, that is Mr. Malhotra, will pass a good title to Mr. Roy, since Mr. Roy acted on good faith and without notice of the previous sale for value. बराबर. भाई रॉय ने गुड फेथ में खरीदा तो उसको नहीं मालूम था क्या चल रहा है, तो ही जस्ट एक्टेड इन गुड फेथ, ही बॉट द प्रॉपर्टी विदाउट प्रीवियस थिंग. सो वेयर हाउएवर मिस्टर मल्होत्रा कीप्स द गुड्स एज मिस्टर बसूज बेली, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई. बराबर. मिस्टर मल्होत्रा हैज केप्ट द गुड्स एज मिस्टर बासूज बेली, देन दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई. बराबर. दैट इज ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, यू हैव कीपिंग इट एज अ बेलमेंट सेटल. In these circumstances, Mr. Roy can sue Mr. Malhotra. मतलब देखो हमने दो बातें डिस्कस की हैं. एक बात, अगर मिस्टर मल्होत्रा अनपेड सेलर है, क्या है? अनपेड सेलर, तो मिस्टर मल्होत्रा ने जो मिस्टर रॉय को गुड्स बेचे हैं वो अपने आप में बराबर है. क्लियर? लेकिन अगर मिस्टर मल्होत्रा इज अ बेली एक्टिंग फॉर मिस्टर बसु, बसु हैज डिलेड इन टेकिंग द राइस. ओके, तो यहाँ पे इफ ही इज एक्टिंग एज अ बेली, देखो पेमेंट के बारे में वो क्लियर नहीं है. इन द मीन टाइम इट इज जस्ट डिलीवरी की बात की है. सो अगर मिस्टर बसु ने पूरी पेमेंट करके ओनरशिप ले ली है, तो ही वाज एक्टिंग एज अ बेली, सो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बेली टू डिलीवर द गुड्स बैक टू द बेलर. एज अ रिजल्ट मिस्टर रॉय कैन सू फॉर डैमेजेस. दोनों बातें लिख दी इंस्टीट्यूट वालों. ये क्लियर बैठा दिमाग में एवरीवन? सबको समझा? ओके, लेट्स सी. 22nd, Raman instructed Suman, a transporter, to send consignment of apples to Mumbai.
After covering half a distance, Sonam found the apples will perish before reaching Mumbai. Hence, he sold those half in the market. Raman sued Suman. So, will he succeed? Clear? अब that's called acting in the agent's authority. Actually a contract act से relation आ जाता है, एक bailment का relationship आ जाता है कि bailey has to take care of the property as far as possible. बराबर? Clear? So let's see. So an agent has a authority under section 189 of the Indian contract in an emergency to do all such act as a man of ordinary prudence would do for protecting the principal from the losses which the principal have done under the similar circumstances. That's what it is. Agent has the authority, he has to do everything under section 189 of the Indian Contract Act. बराबर? As the emergency requires. देखो अगर एक agent को भी as a person of ordinary prudence act करना पड़ता है, he has to protect the, you can say the interest of the principal. Perfect. And so that the principal should not be suffering at the losses at the behest of the agent. So what would a principal done in the similar circumstances? The agent did the same thing. A typical case is where the agent handling perishable goods like apples can decide the time, date and place of sale, no necessary as per the instructions of the principal with the intention of protecting the principal from losses. So when the agent is acting from on the behalf of the principal, the agent can decide at what time, at what place, at what nature he can sell the goods when the goods are of such a nature called perishable nature. Barabar? Clear? Here the agent acts in emergency and act as a man of ordinary prudence. So यहाँ पे agent has acted in emergency. He has acted as a man of ordinary prudence. In the given case, Soman has acted in emergency situation and Raman will not succeed. तो ये था इंस्टीट्यूट का आंसर. उन्होंने ये लॉ ऑफ एजेंसी की तरह ट्रीट किया है. अगर आप ये बेलमेंट की तरह ट्रीट करके आंसर लिखते तो भी आंसर करेक्ट था, मैं मना नहीं करता, तो भी सेम आंसर था, करेक्ट आता था. क्लियर? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम लोग जैसे बोल रहे हैं बेलमेंट, अब मैंने पहले बोला था सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से निकला हुआ एक एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से दो एक्ट निकले थे, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट और एक पार्टनरशिप एक्ट. क्लियर? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से निकला हुआ, इसलिए काफी सारे टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं. जब इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था ना, इतना मोटा था, कॉन्ट्रैक्ट भी था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी था, पार्टनरशिप भी उसी में था. बाद में 1930 में सेल्स अलग किया गया, चैप्टर ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और 1932 में पार्टनरशिप एक्ट को अलग किया गया. अब समझ में आया? क्लियर? फाइन. Question 23. Let's see this one. Okay. Mr. Z bought a refrigerator from a dealer's shop, but he did not mention the required purpose, whether it is fit to make ice. And after using the same, Mr. Z came to know that refrigerator was unfit for the purpose. State giving reason of sale of goods act. Is the dealer liable to refund? Quite very obvious. He is not. Clear? So Mr. Z has brought the refrigerator from the dealer, but Mr. Z did not disclose the purpose. He has not mentioned the purpose. Why is he buying? And after using the same, Mr. Z, he came to know that the refrigerator was unfit for the purpose. What should he be doing? He is asking dealer, refund, paisa do wapas. In that case, what will happen? Let's see. As per section 16, there is no implied condition as to the quality of fitness for any particular purpose of the goods supplied under a contract of sale. Okay? 16 goes like, see, there is no implied condition that every good has to meet the requirement of the quality of the fitness as you want it. Okay? It is not an implied condition. मतलब जो भी मैं सामान खरीदता हूँ, चाहे आप मोबाइल खरीदो, लैपटॉप खरीदो, इलेक्ट्रॉनिक्स में या कुछ और खरीदो, वो आपके पर्पस को मीट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है. वो आपको लगता है आपके पर्पस को मीट करता है, बट नॉट एवरीथिंग डज दैट. ओके? इन अदर वर्ड्स, द बायर मस्ट सैटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द क्वालिटी एज वेल एज सुटेबिलिटी ऑफ द गुड्स. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर. This expressed by the maxim caveat emptor, that buyer be aware. But there is an exception to this rule of
condition as to quality or fitness. बराबर? There are certain conditions as to quality and fitness. There is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for a particular purpose described if there are conditions satisfied. तो अगर goods में ही लिखा हुआ है कि these goods are fit for so and so purpose, then it has to meet the condition as given in the description of the goods. Yes, it has to meet the condition as given in the description of the goods. Clear? So there is implied condition that the goods shall be reasonably fit for a particular purpose described if three conditions are satisfied. The particular purpose for which the goods are required must have been disclosed expressly by the buyer. Clearly बताना चाहिए मुझे इस purpose के लिए ऐसे काम के लिए goods चाहिए. Now ask the seller, does it meet the requirement? Clear? The buyer must have relied upon seller's skills and judgment. सेलर को बोला देखो मेरे को इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप बताओ मेरे को ये पर्पस ये है चीज है, आपका ये गुड्स मीट होगा. अगर आप बोलते हो हाँ नहीं हुआ तो मैं वापस भी करूंगा. एंड द सेलर्स बिजनेस मस्ट बी टू सेल सच गुड्स. सेलर उस बिजनेस के लिए नोन है. ओके तो अगर आप सपोज घर पे पाइप का काम करवा रहे हो, पाइपिंग, ओके जिसके अंदर आप वो वॉशरूम्स की पाइप, अलग अलग एरिया की पाइप फिट करवा रहे हो, तो जिससे आप खरीदते हो उसको बोलते हो कि आई नीड अ बेटर क्वालिटी पाइप, यहाँ पे अच्छे तरीके का पाइप चाहिए और इस तरीके का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चाहिए, वाटर का ज्यादा प्रेशर हो कम प्रेशर हो, मेरा वो एरिया का वाटर के प्रेशर्स के हिसाब से उसको मीट करना चाहिए. तो जब आप सेलर की स्किल पे रिलाई करते हो तो यू शुड गेट द गुड्स व्हाट यू डिजर्व फॉर. ओके नाउ दिस कंडीशन कैन नॉट बी इन्वोक्ड अगेंस्ट द कैजुअल सेलर. ओके कैजुअल मतलब जो जनरल सेलर है उसके अगेंस्ट नहीं. आप स्टोर्स में जाके चीजें लेते हो, यू कैन नॉट बी सेइंग ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए मीट होना चाहिए. In the given case, Mr. X bought the refrigerator from the dealer's shop, but he did not mention the required purpose, whether it is fit to make ice. अभी Z गया, फ्रिज है, हाँ जो फ्रिज में आइस तो बनती ही होगी, खरीद लिया, but he did not find the purpose suitable, and after using the same, Mr. X came to know that refrigerator was unfit for the purpose. The dealer is liable to refund the price because the refrigerator was unfit for the purpose which was meant for. The buyer was not required to disclose the particular purpose. ये इस केस में हुआ Evans versus Tel Benjamin. यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिशर्स का एक केस था, पुराना केस था, इसमें ये बोला गया कि डीलर इज लायबल टू रीपे द प्राइस, रिफंड द प्राइस. व्हाई? माना उसने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन एक रेफ्रिजरेटर अपने जनरल पर्पस को तो मीट करना चाहिए ना, फॉर मेकिंग द आइस. दैट्स व्हाट द कोर्ट सेड. द रेफ्रिजरेटर वाज अनफिट फॉर द पर्पस फॉर व्हिच इट वाज मेंट. इट्स अ जनरल पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्शन. ओके एंड देयरफॉर द बायर वाज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज दिस पर्पस. एक बायर को आके रेफ्रिजरेटर लेते समय ये नहीं बोलना पड़ता है कि ये आइस के लिए है क्या, बिकॉज it was written this was a ice chamber, this was a storage chamber. तो वो अपने डिस्क्रिप्शन को तो मीट करना चाहिए और उसमें उधर वही काम नहीं हो रहा. इसलिए इस केस के अंदर यहाँ पे Z के फेवर में गया था. ठीक है, बट हमने पूरा लॉ का पॉइंट डिस्कस किया है ये, और फिर उसके बाद ये केस आया. ठीक है, क्लियर. फाइन. एग्जाम में इतना सारा लिखना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स. आपको जनरल डिस्कशन देना है कि केवीएट एमिटर क्या होता है, फिटनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है. अगर आपको ये केस याद नहीं, वैसे भी याद नहीं रखना है, ये सिर्फ इस केस का जजमेंट है. दिस वाज द क्रक्स ऑफ द केस. समझ में आया? क्लियर. ओके, लेट्स सी दिस वन. क्वेश्चन 24 पे. Markin, seeing a mobile phone in the showcase of a shop which was marked for sale of 2,000, enters the shop, places 2,000 cash on the counter and told him to give the displayed phone. Shop owner refused. Can the shop owner refuse to sell the displayed mobile? 2000 का फोन लगा हुआ था शॉप पे. मार्किन ने देखा यार 2000 का फोन, गया कैश काउंटर पे कैश रख दिए. शॉप ओनर बोलता है 2000 का नहीं, भाग इधर. आप समझ जाए. So price quotations and the price tags do not amount to offer but only invitation to offer. ये बात भी क्लियर है. शोरूम में लगा हुआ प्राइस का quotation, their price tag are not offer, they are just invitation. Therefore, Markin's picking up the mobile price tag of 2,000 amounts to offer to Markin.
for by Makan to purchase the same at that price. तो माकन ने 2000 रुपया उस प्राइस टैग के हिसाब से दिया, तो it amounts that he is making an offer to purchase the same. It remains to be accepted by the seller. Seller has to accept it. The salesman at the cash counter of the mobile store result in concluded contract. अगर seller ने उसको accept किया होता उस cash को, तो it would have been resulted into a concluded contract. The salesman has every right to accept or refuse the offer. बराबर. Thus Markan shall have no remedies. तो clearly बोल दिया. तो लॉ में क्या बताया कि the quotation that you see in the offer, एक चीज का ध्यान रखना, वो invitation है, that is not the offer. उसको उसी प्राइस पे देना पड़ेगा. There is no such law. ऑफर तो तुम कर रहे हो कि मैं 2000 रुपए में वो खरीदता हूं as per your price tags, as per your price tags. ओके, अब इसमें उस सेलर को एक्सेप्ट करना, अगर वो कैश एक्सेप्ट करता है तो उसे गुड्स देना पड़ेगा. अगर वो कैश एक्सेप्ट नहीं करता, he is not bound to give you the goods. Okay, let's see Lalit wala questions. Question 25 का. Lalit delivered saris values of 50,000 to Rohit on sale or return basis. Rohit further delivered these saris to Sumit and Sumit to Mohit on the same terms and conditions. Subsequently, these saris were burned by fire while in the custody of Mohit. Lalit filed the suit against Mohit for recovery of the price. With reference to sale, examine whether Lalit's suit shall be maintainable. Quite interesting. ललित ने साड़ी 50,000 की किसको दी थी? रोहित को. रोहित ने उसी टाइम पे सुमित को. सुमित ने उसी टाइम पे मोहित को. साड़ी किसके पास है? मोहित के पास. साड़ी किसके पास है? मोहित के पास. अब ललित has filed a case against Mohit for recovery. Maintainability के ऊपर है. Okay. Well, in the case of sale of goods, like the sale or return basis, a property in the goods passes from the seller to the buyer in any of the following circumstances as satisfied. तो अगर कुछ सेल और रिटर्न बेसिस पे होता है तो एक प्रॉपर्टी दूसरे को जाती है, पर कैसे जाती है? When the buyer signifies his approval or acceptance to the seller, जो भी खरीद रहा है वो बोलता है भाई हाँ मैंने खरीदा है. When the buyer does an act of adopting the transaction, that is sells or pledges the goods to a third party, buyer ने किसी और को दिया है तो फिर भी हो जा सकती है. बराबर. The ownership can transfer in this fashion also. And where he, that is the buyer, retains the goods without giving notice of rejection beyond the time fixed for the return of the goods and beyond reasonable consideration. So buyer उस goods को रख लेता है beyond a period of time and he is not returning the goods. Thus, in the given problem, Rohit is deemed to have accepted the sari by further transaction to Sumit and Sumit is deemed to have accepted the sari by further to Mohit. बराबर. The ownership thus rests with Sumit till Mohit approves or does anything of adopting the transaction. तो owner कौन है? Owner Sumit हो जाता है. In the meantime, the saris were burned from the custody of Mohit and it is assumed that Mohit has handled the sari with due care. Assuming he has handled due care, उसने कोई बैठ के साड़ी को आग नहीं लगाई थी, ध्यान रखा था पर आग लग गई. बराबर. Clear? Hence, the loss should fall on Sumit, who was the immediate owner, because at present he is the owner and the risk is associated with ownership unless otherwise agreed between the parties. तो risk किसके साथ होती है? Ownership के पास. तो unless it is otherwise agreed, the risk goes with the ownership. समझा? ठीक. अब ये पूरा context समझ में आया? Yes, very good. Okay. चलो 26 क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है. Abhishek contracts to sell Bhushan by showing sample certain quantity of tea prescribed as the best quality Darjeeling tea. The tea, when delivered, matches with the sample, but it is not Darjeeling tea. Referring sale of goods act, advise the remedy available to Bhushan. So Bhushan is the buyer. उसने टी खरीदी है और अभिषेक ने उसको बोला ये बेस्ट क्वालिटी दार्जिलिंग टी. It is the best quality. I don't deny that. It is meeting the sample, but it is not Darjeeling tea. तो भूषण क्या कर सकता है? In that case, the sale by sample is described under section 17 of the Sale of Goods Act. A contract or sale is a contract for the sale by sample where there is a term in the contract expressed or implied to that effect. So, in the case of a contract or sale by sample, there is an implied condition. Okay.
देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन। ठीक है, ये देखो इन सब जगह पे मैंने लॉ इसलिए डिस्कस किया ताकि आप लॉ भी पढ़ सको, भूल मत जाना। ठीक है, और इंस्टीट्यूट का आंसर मैंने पूरा दिया, ये इंस्टीट्यूट के आंसर है। So, sale by sample is described in section 70. A contract for sale is a contract for sale by sample where there is a term in the contract express or implied to that. Now, in the case of a contract for sale by sample, there is an implied condition also. Yeah, that the bulk shall correspond with the sample. That they shall have reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. You can compare the bulk. That the goods shall be free from any defect rendered them unmerchantable which would not be apparent on the reasonable examination. तो ऐसा कोई डिफेक्ट भी नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है गुड्स में, गुड्स अपने आप में बराबर है। सो बल्क को मैच करते हैं, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग है, एंड द गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट व्हिच इज रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल। वो बेचे नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं था। It would be apparent on reasonable examination. Okay. In the contract of sale of brand by sample, Bhushan is entitled to return the tea and claim the refund of money as there is a breach of contract. Exactly. Bhushan can claim because Darjeeling quality tea में Darjeeling tea नहीं है. So what should he be selling? Okay. So he can refund the tea. अब ये समझा? Okay. Mr. RK sells 200 bales of 27th question now. RK sells 200 bales of clothes to SK and send 100 bales by lorry and 100 bales by railway. SK receives delivery of 100 bales sent by lorry, but before he receives delivery of bales sent by railway, he becomes bankrupt. RK still unpaid stops the goods in transit. The official receiver on SK's insolvency claims the good. Decide referring the case. Okay. तो यही वो स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट वाला केस निकला। देखो आरके ने 200 बेल भेजे थे, 100 बेल्स लॉरी से, 100 बेल्स रेलवे से। लॉरी वाले गुड्स पहुंच गए, रेलवे वाले गुड्स नहीं पहुंचे, एंड बिफोर रेलवे वाले गुड्स रीच द डेस्टिनेशन रोक लिया उसको। अब ऑफिशियल रिसीवर बोलता है नहीं वो गुड्स खरीदे हुए हमको तो हम बेच के पैसा वसूलें, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर? तो यहाँ पे क्या ऑफिशियल रिसीवर को मिल सकता है? वी हैव टू डिसाइड एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्लियर? लेट्स सी। Section 50 of Sale of Goods Act states that subject to the provisions of this act, where buyer of the goods becomes insolvent, the unpaid seller who has parted with the possession of the goods has right to stop them in transit, and that is to say, he may refuse the possession of the goods as long as they are in course of transit and retain them until the payment of tender price. क्लियर? ये डिस्कस किया था। फिर जब तक सामने वाला उसके गुड्स का प्राइस नहीं देता और इंसॉल्वेंट हुआ है, then the seller has a right to stop the goods in transit. बराबर? Clear? Hence, the major rule applicable would be the seller must be unpaid, he must have parted with the possession of the goods must be in transit, and the buyer must have become insolvent. So stoppage in transit, for this purpose the seller must be unpaid seller. He must have parted with the possession निकल चुका था. The goods are still in transit, पहुंच रहे हैं, and the buyer is insolvent, तब रोक दिया गया. बराबर? Applying the above provisions in the given case, we may conclude that RK being unpaid can stop 100 bales of cotton sent by railways as these are still in transit and SK becomes insolvent. अब समझा? तो यहाँ पे SK इंसॉल्वेंट हुआ है, तो RK कैन स्टॉप द गुड्स। क्लियर? ओके, लेट्स सी द अदर वन। 28th question. With a view to boost sale, ABC Limited sells a new machine. Mr. B on trial basis for a period of 3 years. Or sells a new machine to Mr. B on trial basis for a period of 3 days with the condition that if Mr. B is not satisfied with the performance of the machine, he can return back to the new machine. Okay. With a view to boost the sale, Mr. ABC Limited sells machine to Mr. B on trial basis, ये चेंज कर लेना, ठीक है, ट्रायल बेसिस।
trial basis for a period of 3 days with the condition that if Mr. B is not satisfied with the performance of the new machine, he can return it back the new machine. वो नया machine वापस कर सकते हो. However, the machine was destroyed in fire accident at the place of Mr. B before the expiry of 3 days. Whether B is liable for the loss suffered of the sale of goods. ठीक है, समझा? तो यहाँ पे लेट्स सी क्वेश्चन समझा क्या पहले. एबीसी लिमिटेड ने मिस्टर बी को ट्रायल बेसिस पे मशीन दी थी 3 डेज के लिए. ओके, 3 डेज विद द कंडीशन दैट इफ मिस्टर बी इज नॉट satisfied, if he is not satisfied with the performance of the machine, he can return it back. Okay, however, the machine was destroyed by the fire accident at the place of Mr. B. बराबर, ये है ना क्वेश्चन. And before the expiry of 3 days itself, it has destroyed. And Mr. B is liable. Mr. B is liable. Okay, let's see. As per Section 8 of Sales of Goods Act, where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perishes or becomes so damaged as no longer answer their description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided. Clear? ये बात बहुत क्लियरली आ गई है. सेल्स सेक्शन 8 क्या बोलता है? एक बार अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गुड्स दिए हैं, एक बार एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गुड्स दिए हैं, ओके, ऑन गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फॉर नो फॉल्ट ऑफ द बायर और सेलर. देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स व्हिच हैज हैपेंड एंड नो फॉल्ट ऑफ बायर एंड सेलर and it has not been able to answer to the description of the agreement. Okay, so before the risk passes to the buyer, the agreement can be avoided. Barabar. In the given case, that subject matter of the contract is a new machine which was destroyed before the transfer of property from seller to buyer. So there was a clear destruction. There was a clear destruction of the property. Barabar. In the given case, the subject matter itself is destroyed before the property is transferred. Thus, the risk passes only when the ownership is transferred to the buyer, and therefore, in the present case, Mr. B is not liable for the loss suffered due to the fire accident is over, on which Mr. B has no control. Exactly. So, the risk actually passes only when the ownership is transferred to the buyer, and therefore, in this present case, Mr. B is not liable for any kind of loss which is suffered by the fire accident, over which the B has no control. Thus, ABC will have to bear the loss whatever fire accident has taken place. So, loss actually goes in the favor of ABC. Okay, clear? Fine. Let's see 29th question. For the purpose of making uniform of employees, Amit bought dark blue colored clothes from Bhagat, but did not disclose to the seller the purpose of said purchase. When uniforms were prepared and used by the employees, the cloth was found unfit. However, there was evidence that the cloth was fit for caps, boots, carriage, things. Advise Amit whether he is entitled to have the remedy in the sale of goods act. Again, same वही 16th वाला केस, implied condition meet होनी चाहिए. Okay? तो यहाँ पे केस में क्या हुआ है that अमित ने गुड्स खरीदे हैं यूनिफॉर्म पर्पस की, लेकिन उसने बताया नहीं था. उसने ये नहीं बताया कि वो यूनिफॉर्म के लिए ले रहा है, और जबकि वो गुड्स फिट थे कैप बनाने के लिए, बूट्स बनाने के लिए, कैरेज बनाने के लिए, उसके लिए फिट थे, पर यूनिफॉर्म के लिए फिट नहीं थे. तो क्या अमित को उसका पैसा वापस मिलेगा या कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला. आपने बताना चाहिए था, बराबर ना. सो as per section 16 of Sale of Goods Act, an implied condition in a contract of sale is that an article is fit for a particular purpose only arises when the purpose for which the goods are supplied is known to the seller, and the buyer relied on the seller's skills or judgment, and the seller deals in the goods in the usual course of business. Clear? तो implied condition कि ये उसके description को meet करता है, ये उसके जैसा ही meet करता है. तो होता क्या है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको क्या बोला, शूज के शॉप में जाके शूज का ऑर्डर करो, इट हैज टू. अगर आप स्पोर्ट्स शूज के शॉप में जाओगे तो आपको स्पोर्ट्स शूज मिलने चाहिए. यू शुड नॉट बी गेटिंग अदर काइंड ऑफ शूज. क्लियर? तो द सेलर मीट्स इन दैट काइंड ऑफ बिजनेस. द कंडीशंस आर वेरी सिंपल. implied conditions तब आती हैं जब it meets the particular purpose and for which the goods have been supplied for. Clear? And the buyer or
relies on the seller skills कि सर मुझे ये पर्पस के लिए चाहिए, आप मुझे ये गुड्स दे दीजिए, इससे मैं ये काम करने वाला हूं। उसको बता रहे हो आप, मैं ये काम करने वाला हूं, क्या इससे ये काम हो सकता है? आप बताइए, क्योंकि आप बेचते हैं इन चीजों को और आप रेगुलरली बेचते हो, आप कोई जनरल स्टोर वाले नहीं, आप इसके एक्सपर्ट स्टोर वाले हो। So in this case, the cloth supplied is capable of being applied for variety of purposes. The buyer should have told the seller the specific purpose for which he is required the goods. भाई कई पर्पस के लिए आप ये गुड्स यूज कर सकते थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो he should have told for what purpose he requires the goods. Okay, clear? So therefore, the implied condition as to the fitness for the purpose does not apply. Hence, the buyer will not succeed in getting any remedy from the seller. So there is no question of getting any kind of implied purpose for fitness. वो तब apply होता जब specifically बताया होता. Okay, clear? Fine. Let's see the other one. Question 38. Mahindra made hire purchase agreement with Narendra for a car for which Narendra was described as the owner. Mahindra paid 4 of the 12 monthly installments and then learned that Jitendra claimed to be the owner of the car. He nevertheless paid the balance installment and exercised his option to purchase. Jitendra then demanded the car and Mahindra gave it up to him. Mahindra then sued Narendra for recovery of full price and Narendra countered the claim for reasonable sum as hiring charges for the car during the period it was with Mahindra. Okay. देखो, Mahindra made a hire purchase agreement with Narendra. Mahindra ने क्या बोला कि मेरे को ये कार हायर परचेज से चाहिए। किसको बोला? नरेंद्र। बराबर, क्लियर? फॉर अ कार विच नरेंद्र ने बोला ये मेरी कार है। Mahindra paid for the 12 monthly installments and learned that Jitendra was claiming to be the real owner. Nevertheless, he paid the balance installment. He exercised his option to purchase the car. But Jitendra then demanded the car and Mahindra ने उसको कार दे दी। और महेंद्र नरेंद्र से क्लेम कर रहा है पूरा प्राइस। नरेंद्र बोलता है नहीं, तूने हायर परचेज को ली थी तो हायर का चार्जेस है वो। Here, let's see what the Pay Institute has said. Because actually इस केस के अंदर if you see महेंद्र, क्या महेंद्र को पैसा मिलेगा? Okay, fine. So let's see. The Nemo Dat Code non-habit rule protects the true owner, that is Jitendra, and buyer Mahindra, who are aware of Narendra's defective rights after paying the 4th installments. So यहाँ पे paid 4 of the 12 installments लिखा है, बराबर, paid 4 of the 12. So यहाँ पे यहाँ तक Mahindra was aware that Narendra's title is defying after paying the 4th installment, would not get any right or title out of his ineffective hire purchase agreement with Narendra. ये बात पता थी महेंद्र को that he will not get any kind of title because the title was ineffective. Now, because Narendra was neither the owner nor authorized person to put the car on hire purchase, and for the same reason he is not entitled to receive any money under the agreement. जब आपके पास टाइटल ही नहीं था तो आप उसके अंदर एग्रीमेंट में पैसा कैसे कमा सकते थे? ओके, और ये बात उसको 4th इंस्टॉलमेंट के टाइम पे ही पता चल गई थी, तो उसको तभी रोक देना चाहिए था। However, Mahindra may be asked by Jitendra to pay a reasonable rent for the use of the car, and Mahindra can recover the amount from Narendra. Mahindra Narendra से recover कर सकता है, लेकिन Jitendra may ask Mahindra that you have used my car, you have to pay the rent. आप समझ में आया? Clear? Why? Because Mahindra was aware by 4th installment that Jitendra is the true owner, not Narendra. So Jitendra has a right of asking the rent, but Narendra has got unlawful possession of the property, and as a result, the return of the money which was advanced can be demanded from Narendra. Okay, let's see case number 31st. Okay, X buys synthetic pearl for a high price, thinking that they are natural pearls. The seller, though understood X's intention to be silent, kept silent. The seller, though understood X's intention, kept silent. The buyer, though understood X's intention to be silent, kept silent. The seller, though understood X's intention to be silent, kept silent. The buyer, though understood X's intention to be silent, kept silent. The seller, though understood X's intention to be silent, kept silent. The buyer, though understood X's intention to be silent, kept silent. The seller, though understood X's intention to be silent, kept silent. The buyer, though understood X's intention to be silent, kept silent. The seller, though understood X's intention to be silent, kept silent. The buyer, though understood X's intention to be silent, kept silent. The seller, though understood X's intention to be silent, kept silent. The buyer, though understood X's intention to be silent, kept silent. The seller, though understood X's intention to be silent, kept silent. The buyer, though understood X's intention to be silent, kept silent. The seller, though understood X's intention to be silent, kept silent. The buyer,
Examine the remedies X has against the seller as per the Sale of Goods Act. So Mr. X has bought synthetic pearls for a very high price, thinking that they are natural pearls. And the seller, though he understood that X का intention ये था, he kept selling. Now हमसे पूछा क्या? Examine the remedies X has got against the seller. So what is the remedy? X has no such remedy against the seller as the doctrine of caveat emptor will apply. Why? Buyer be aware. Caveat emptor means let the buyer be aware that in a sale of goods, the seller is under no duty to reveal unflattering truth about the goods sold. Okay, so let the buyer be aware. That clearly means that seller is not bound to describe everything. आपको बताना पड़ता है आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, उसके हिसाब से मैं आपका आंसर दूंगा. I'm not bound as a seller to give you everything about the goods. वो उसके ऊपर लिखा हुआ है, चाहिए तो देख लो. So therefore, when a person buys some goods, he must examine them thoroughly. If the goods turns out to be defective or do not suit his purpose, or if he depends upon the skill and judgment and makes a bad selection, he cannot blame anybody except himself. So that's how it is. That if you buy a good and if the goods turns out to be a defective goods or they do not meet your requirement and it is depending upon your skill or judgment, you made your selection, you have to be blamed for yourself. Okay, fine. Let's see question number 32. Mohit finds a ring of Shraddha and sells it to a third person Prachi who purchases it for a value and in good faith. Whether Shraddha can file a suit for recovery of the ring, advice. And advice with a cogent reason, with a genuine reason. Okay, with a reasonable reason. ऐसे है. Cogent is a genuine reason. Okay, तो हमने आपको genuine पूछा तो law भी लिखेंगे. So as per section 71, a person who finds goods belonging, और याद रखना Contract Act का 71 है. A person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to same responsibility as a bailiff. He is subject to the same responsibility as a bailiff. He is bound to take care of such goods as a man of ordinary prudence, and he is treated as an owner against the whole world except the truth. Okay, so question में हुआ क्या? Mohit has found a ring of Shraddha. He sells it to a third person called Prachi, who purchases it for a value and in good faith. Now Shraddha can file a suit for recovery of the ring. तो यहाँ पे finder of goods का law हमने discuss किया section 71 का bailment के हिसाब से. So in the given case, sale by Mohit to Prachi is not valid as Mohit has no title. He has no title to sell the goods, and Shraddha can recover the ring from Prachi, and Prachi can recover damages from Rohit for breach of the implied condition as to sale. Remember that a person who is selling the property must have a title to the property, which Mohit is not complied with. Okay, clear? Fine. Question 33. A doctor purchased woolen undergarments from S, a retailer, shopkeeper, whose business was to sell goods of that description. But after wearing the undergarments, the doctor developed some skin disease. Can the doctor claim damages from S under the Sale of Goods Act? Quite interesting. So, doctor has purchased woolen undergarments, okay, from a retailer or shopkeeper जो उसी business में, that is whose business is to sell the goods as per the description. But after wearing that, the doctor is getting some skin disease. Can the doctor claim damages? Okay. So यहाँ पे Sale of Goods Act के हिसाब से fitness के ऊपर आते हैं that the goods has to meet the fitness requirement or all this. According to Sale of Goods Act, in a contract of sale, there is no implied warranty or condition as to the quality of fitness for a particular purpose for which the goods is supplied. देखो, Sale of Goods Act आपके goods पे लिखे गए description को meet कर सकता है. मैं जब आपको goods देता हूँ, it contains so and so, it does not, उसको meet कर सकता है. But there is no implied warranty or even a condition that it has to meet the quality of fitness for your purpose. हर body को वो suit करेगा ऐसा जरूरी नहीं है. There is no implied warranty or condition also. Okay, but there is an implied condition that the goods are reasonably fit for the purpose for which they are required. ये बात जरूर है. The goods has to be meeting the purpose for which they are supplied. The buyer
if the buyer expressly or by implication makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required, so as to show that he relies on seller's skills and judgment. ये बात भी clear. If the buyer clearly or even by implication makes the seller aware that I need goods for so and so purpose, and he relies upon the seller's skill and judgment for that purpose, and the goods of a description which it is in the course of seller's business to supply, whether he is a manufacturer or producer or not. There is no such condition if the goods are bought under the patent or trademark. And sale of goods act इतना ही बोलता है, the goods must be of the description which is in the course of seller's business. Seller उसके business में है. He may be a manufacturer, he may be a producer, he may not be that, he may just be a retailer. Okay, but there is no such condition that वो एक brand होना चाहिए, वो एक trademark का होना चाहिए, ऐसा कोई condition नहीं है. Clear? समझ गया? तो यहाँ पे in the case of Grand versus Australian Knitting Mills, G, a doctor, purchased a woolen underpant from M, a retailer whose business was to sell goods of that description. After wearing the undergarments, G developed some skin disease. The court held that the goods were not fit for their only use and G was entitled to avoid. मतलब कोर्ट ने बोला what goods are undergarments for. They should be giving that comfort to that person. Clear? And the goods are not fit for the purpose for which they were meant for. अगर कोई आपसे अंडरगारमेंट लेके जाता है कि सर्दी के हिसाब से मुझे अंडरगारमेंट चाहिए, तो वो उसके बॉडी को सूट करने चाहिए कि नहीं, आप उस अंडरगारमेंट्स को बेचते हो. In view of this, the doctor claim for damages is valid. The claim of the doctor is valid. Clear? अब समझ में आया? चलो, with this, the chapter comes to an end. Okay? So, आज इतना खत्म हुआ. सेल ऑफ गुड्स एक्ट. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कुछ नया करेंगे.